Hello, my dear students. I Rahul Mishra, and today we are going to discuss quantum numbers. So, what are quantum numbers? So, those numbers which give all the complete information about an electron are called as quantum numbers. It means we can say ऐसे नंबर जो कि किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी या सारी इंफॉर्मेशंस दे देते हैं, देन दैट नंबर्स आर कॉल्ड एज क्वांटम नंबर्स. तो उन नंबर को क्वांटम नंबर कहा जाता है. सो लिसन, दीज इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट. इसका मतलब कि ये जो इंफॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रॉन के बारे में, दीज इंफॉर्मेशंस कैन be the shell in which electron present. It means ये आपकी शेल के बारे में जानकारी दे सकता है. The subshell in which electron is present, इलेक्ट्रॉन के सबशेल में है ये बता सकता है. ऑर्बिटल in which electron is present, ये ऑर्बिटल के बारे में जानकारी दे सकता है. एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन की क्या स्पिन है, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. देन दीज टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस आर गिवन बाय सम नंबर्स विच आर कॉल्ड एज क्वांटम नंबर्स. इट मीन्स वी कैन से क्वांटम नंबर गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट an electron, and these informations may be information of cell, subcell, orbital in which electron is present, and spin of electron also. Now we will discuss types of quantum number. So quantum number is of four types. First one is principal quantum number. It is represented by small n. Azimuthal quantum number, this is second. It is represented by small l. Third, magnetic quantum number. It is represented by small m. And last, spin quantum number. It is represented by small s. So listen, quantum number is very interesting. Now we will discuss first quantum number. So listen here, first quantum number is principal quantum number. So principal quantum number is represented by small n, and it tells about the shell in which electron is revolved. It means ये जो n है हमारा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या बताता है, ये शेल के बारे में जानकारी देता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रैवल करता है या चक्कर लगाता है. Now if the value of principal quantum number small n is equal to 1, it means electron revolve in K shell. If small n is equal to 2, it means electron revolve in L shell. If small n is equal to 3, it means electron revolve in M shell. If small n is equal to 4, it means electron revolve in N shell. Simply we can write the values of n and their shells. It means we can say, so listen, there is some correction. This is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. So n is equal to 1 means K cell, n is equal to 2 means L cell, n is equal to 3 means M cell, and n is equal to 4 means N cell. Now we will discuss. So listen, this will be 1, this will be 2, this will be 3, and this will be 4. So correct it. Now next thing is azimuthal quantum number. So what is azimuthal quantum number? It is represented by small l. So listen,
it tells about the subshell in which electron is present. It means Azimuthal gives the information about the subshell in which electron is present. We all know that subshells are S, P, D and F. So for S subshell, these are subshells. So for S subshell, the value of small l is 0. For P subshell, the value of small l is 1. For D subshell, the value of small l is 2. And for F subshell, the value of small l is equal to 3. We can see from here. So there are the values of n and their subshells. Now, if n is equal to 5, listen, if n is equal to 5 or for the given value of small n, for the given value of small n, the value of L is equal to 0 to n minus 1, 0 to n minus 1. It means n के दी हुई वैल्यू के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 0 to n minus 1 होती है। l की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं 0 से लेकर n minus 1। Here n is equal to 5 is given, it means what? 0 to 5 minus 1, it means 0 to 4। इसका मतलब l की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 0 to 4। तो अगर l इज इक्वल टू 0 है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन s सबशेल में है, l इज इक्वल टू 1 है तो p सबशेल में। इफ l इज इक्वल टू 2 देन d सबशेल, इफ l इज इक्वल टू 3 देन f सबशेल, इफ l इज इक्वल टू 4 मीन्स g सबशेल। इसका मतलब L की वैल्यू हमें क्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में प्रेजेंट होता है। इट मीन्स वी कैन से principal quantum number give the information about cell in which electron is present, and Azimuthal quantum number gives the information about subcell in which electron is present. Now we will discuss next quantum number, and it is magnetic quantum number. It is represented by small m. So it tells about the orbital in which electron is present. तो ये क्या बताता है कि हमारा ऑर्बिटल कौन सा है, या इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में चक्कर लगा रहा है या किस ऑर्बिटल में मोशन कर रहा है, ये कौन बताता है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m. So the value of magnetic quantum number for the given value of L, it is given by a formula m is equal to plus L2 minus L. इसका मतलब L की दी हुई वैल्यू के लिए जो m की पॉसिबल वैल्यूज होती हैं वो कहाँ से कहाँ तक होती हैं, प्लस L से माइनस L तक या माइनस L से प्लस L तक। Simply we can understood it from this example. Listen, if L is equal to 1, then possible values of m will be plus 1 to minus 1. It means we can say plus 1, what are the integers between plus 1 to minus 1? So plus 1 comma 0 comma minus 1. It means we can say what? How many possible values of m are there? There are 3 possible values of m. Plus 1, 0, minus 1. Or we can say minus L to plus L. It means minus 1 to plus 1. It means we can say minus 1 comma 0 comma plus 1 also we can write. So listen here. The possible values of m are plus 1 comma 0 comma minus 1 or minus 1 comma 0 comma plus 1 also. Now so listen, possible values of small m
is also given by these two formulas. If we have small l value, अगर हमारे पास l की वैल्यू हमें पता है, then how many possible values of m? It will be given by a formula m is equal to 2l plus 1. So listen, we can apply here. If l is equal to 1, then put l is equal to 1 into this formula. M is equal to 2 into 1 plus 1. It means we can say m is equal to 3. So how many possible values of m are there? There are 3 possible values of m. इसका मतलब अगर l की वैल्यू 1 हमें पता है तो m की कौन कौन सी कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी? तो m बराबर होता है 2l plus 1. पुट l इज इक्वल टू 1 हेयर. l की जगह 1 यहाँ पर रख दें तो स्मॉल m की जो पॉसिबल वैल्यूज आ जाती हैं वो आती हैं 3. और हम ये यहाँ से भी देख सकते हैं कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं, +1, 0 और -1. सो देयर आर 3 पॉसिबल वैल्यूज. एंड इफ वी हैव small n value, then total possible values of small m equal to n square. अगर हमारे पास n की वैल्यू हमें पता है तो टोटल m की कितनी पॉसिबल वैल्यू होती हैं? n स्क्वायर. नाउ लिसन, इफ l इज इक्वल टू 2, अगर l की वैल्यू 2 है, सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्मॉल m? सो +l2 -l. It means +2, +1, 0, -1 and listen -2. Now listen, तो जितनी पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास आती हैं, now we draw equal number of orbitals below them. It means हम उनके नीचे उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या करते हैं? खींच लेते हैं. तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल हम खींचेंगे? सो लिसन, 1, 2, 3, 4 and 5. So there will be 5 orbitals. So listen, if l is equal to 2, then how many possible values of m? So there are 5 possible values of small m. And it is given by 2l plus 1 also. So 2 into l is equal to 2 means 2 into 2 plus 1, it means what? It means 5. So we can calculate directly by using this formula the possible values of small m. Now last quantum number is spin quantum number. It is represented by small s. So what is spin quantum number? It tells about the spin of electron or motion of electron. It means ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन या मोशन के बारे में जानकारी देती है. Now listen, if electron travels in clockwise spin या when electron move in clockwise motion, अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करता है, then listen, it is represented by upward arrow. तब इसको upward arrow से represent किया जाता है. So listen, it is represented by upward arrow. या तो इससे करेंगे या फिर इससे करेंगे. Now listen, if any electron moves in anti-clockwise direction, then it is represented by downward arrow. Downward arrow, it is some like this. Now if electron move in clockwise direction, then the value of small s or spin quantum number will be +1/2. So this is the value of small s. It will be +1/2. And if electron travels in anti-clockwise spin, then the value of small s will be -1/2. So listen, there are 2 possible values of small s.
For clockwise motion of electron, S is equal to plus 1 by 2. For anti-clockwise motion of electron, S is equal to minus 1 by 2. Now listen, we can say S has two possible values, plus 1 by 2 and minus 1 by 2. Now we will discuss a numerical problem, and it is determine all the quantum numbers for the last electron of 17 Cl. It means chlorine having atomic number 17. For chlorine having atomic number 17, you have to determine all the 4 quantum numbers. It means chlorine 17 जिसका एटॉमिक नंबर है, उसके लिए हमें चारों क्वांटम नंबर बतानी है. We all know that quantum numbers are N, L, M and S. N is what? Principal quantum number. L is azimuthal quantum number. M is magnetic quantum number and S is spin quantum number. So listen, first work is write down the electronic configuration of 17 Cl. So how many electrons are there? 17, and it is written according to Bau's rule. So there are 17 electrons. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. It means we can say what? Last electron enters in which subshell? 3p subshell. Last electron किस subshell में enter कर रहा है? 3p subshell में. Now listen. Now we write the values of quantum numbers. So listen, it is very simple. So this number represents always shell in which last electron travel. It means ये जो नंबर आगे लिखा होता है किसी सबशेल के, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये उस सेल को रिप्रेजेंट करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारा चक्कर लगाता है. इट मीन्स वी कैन से दिस 3 रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ n. Small n. What is small n? It is principal quantum number. It means we can say the value of small n is equal to 3. So we can say electron is present in third shell. Electron किस cell में present है? Third shell में. It means अगर कहीं पर भी आपको n is equal to 3 लिखा मिल जाए तो आप तुरंत बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में प्रेजेंट है. Because n is what? Principal quantum number. It will give information about an electron and it will give information about cell in which electron is present. Now next quantum number is azimuthal quantum number. The value of azimuthal quantum number is 0 to n minus 1. So n is equal to 3 here. So 0 to 3 minus 1. So 0 to 2. It means 0, 1, 2. Now we write the subshells. So there are 3 subshell S, P, D. So electron is present in p subshell. Last electron enters in p subshell. We can see from here. Last electron enters in p subshell. So for p subshell the value of small l is what? It is 1. It is 1. So listen, L will be equal to 1. L will be equal to 1. It means if anywhere it is written L is equal to 1, then what will give the information about an electron? It will give electron present in p subshell. Electron present in p subshell. This information is given by L is equal to 1. Now next quantum number is magnetic quantum number. The value of magnetic quantum number is plus L2 minus L. It means L is equal to 1. So plus 1 to minus 1. So plus 1, the integers are present between plus 1 to minus 1 are plus 1, 0, minus 1. So listen. Now we know that last electron enters in 3p5 subshell. It means we can say 3p5. It means 3p subshell contain how many electron?
5 electron. 3p subshell contain 5 electrons. Above number represent electron. So 3p subshell contain 5 electron. Now listen, how many possible values of m are present? There are 3 possible values of m: +1, 0 and -1. So listen, draw the equal number of orbital. Now we draw 3 orbitals, 1, 2 and 3. Now listen, how many electrons are present in 3p subshell? There are 5 electrons. There are 5 electrons. So listen, now 5 electrons are filled according to Hund's rule. We all know that filling of electron in orbital is given by Hund's rule. So you have to fill 5 electrons. So first electron, second electron, now third electron, fourth electron, and this is fifth electron. This is fifth electron, and you have to find the value of small m for this electron. It means हमें इस लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना है? स्मॉल m की वैल्यू पता करनी है. Now listen. Now for this electron, we all know that there are some orbitals. P subshell contain 3p orbital, px, py and pz. So always remember, for pz orbital, this is pz orbital, the value of small m is equal to 0. It means pz orbital के लिए जो small m की वैल्यू होती है वो हमेशा आपको याद रखना है कितनी होती है? 0 होती है. But listen, for px orbital it may be +1 or -1 also, because the possible values of small m are +L to -L or -L to +L. It means we can say for px +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है. py के लिए -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है. But for pz orbital the value of small m is always 0. Now listen, we can understood it from here. 3p5 means 3p subshell contain 5 electron, or we can say what? We can say 3p subshell contain 3p orbital and there are 5 electron, 1, 2, 3, 4 and 5. Now the values of small m are +1 to -1, +1, 0, -1 or -1 to +1. So listen, this is px orbital, this is py orbital, and in center this is pz orbital. So for px orbital the values of m may be +1 and -1. The values for py orbital it will be +1 and -1. But हमें केवल किससे मतलब है? हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन का देखना है. लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा जा रहा है pz ऑर्बिटल में, और pz ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू हमेशा कितनी है? 0. m की वैल्यू हमेशा कितनी है? 0. So listen, for last electron, what is the value of magnetic quantum number? It is 0. It is 0. Now what is the spin of last electron? जो last electron है उसकी spin क्या है? It is anti-clockwise. So for anti-clockwise, small s is equal to -1/2. Small s की वैल्यू क्या होती है, या स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? -1/2. For last electron, it is in anti-clockwise direction, so it perform anti-clockwise spin. So small s value will be -1/2. Now listen, it is very interesting. N is equal to 3, L is equal to 1, M is equal to 0 and S is equal to -1/2. This is the set of all 4 quantum numbers. ये चारों क्वांटम नंबर का सेट है, और ये अगर कहीं भी लिखा है तो आप बता सकते हैं
इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। नाउ व्हाट इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन बाय दिस क्वांटम नंबर? If n is equal to 3, it means electron present in third shell. Electron present in third shell. If L is equal to 1, it means electron present in p subshell. क्योंकि n जो है वो शेल की इंफॉर्मेशन देता है, L किसकी इंफॉर्मेशन देता है? सब सेल की। m is equal to 0, it means electron present in which orbital? In pz orbital. In pz orbital. Now s is equal to minus 1 by 2. Which information given by s? So electron perform anti-clockwise spin. Electron perform anti-clockwise spin. It means we can say that quantum number gives the information about an electron. इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो क्वांटम नंबर होती है अगर वो कहीं भी लिखी है तो हम उससे इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि वो किस सेल में प्रेजेंट है, वो किस सेल्फ सेल में प्रेजेंट है, वो किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, या उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है। नाउ आई विल गिव सम होमवर्क टू यू। सो कैलकुलेट all the quantum number for scandium 21. So calculate all the quantum number for the last electron of scandium 21. आपको क्या करना है? स्कैंडियम 21 जिसका एटॉमिक नंबर है, इसके लिए चारों क्वांटम संख्याएं बतानी है। कौन कौन सी? n, l, m और s. And this question is totally same as previous question. So listen, this is your homework. Calculate all the quantum number for the last electron of 21 scandium. It means scandium atom जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर आपको बतानी है। दिस इज योर होमवर्क। थैंक यू।